उनका ये एक ही जगह का ये सेकंड बोर्ड है। इसमें उनका बोलना है कि 19 वोल्ट शॉर्ट है, ऐसी मदरबोर्ड शॉर्ट आउट है, ऑन नहीं हो रहा है करके। क्लियर इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है पूरा। देखते हैं पावर लगा के क्या कहानी है। शॉर्ट है ये, ठीक है। फुल पावर लोड ले रहा है सीधे सीधे। तो इसमें शॉर्ट क्या है फिजिकली देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करके चेक कर सकते हैं। मैं ऐसे ही देख लेता हूँ, कहीं कुछ दिख जाता है तो। ऐसा कुछ खास नज़र तो नहीं आ रहा है। एक चीज़ दिख रहा है, इसका शायद सीपीयू खुला हुआ है। इसको कौन खोला है, क्यों खोला है पता नहीं। इसको लॉक निकला हुआ है। देखता हूँ फिर से पावर कनेक्ट करके। शॉर्ट है अभी भी। यहाँ पे थर्मल कैमरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन उतना हाई फाई बजट नहीं है। एक छोटा सा काम करते हैं, जहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा वहाँ पे हमारा ये फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नज़र घुमा लीजिए। ये हमारे भैंस है, इसी के पास में कुछ दिख रहा है, नहीं लग रहा। ठीक, तो इधर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। सीपीयू सेक्शन के पास में
जहाँ जहाँ सस्पेक्टफुल हो सकता है थोड़ा सा फ्लक्स वाला अप्लाई कर लेते हैं। फैन को बंद करोगे क्या? उड़ जाता है। कम कर लेते हैं, इतना ज़्यादा वोल्ट का ज़रूरत तो है नहीं। शॉर्टिंग हो को किसी दिख जाएगा, एम्पियर को भी 2 में रख लेते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस। अगर कुछ ख़राब हुआ तो आगे डैमेज ना करें। तो इसी देख लेते हैं कहीं कुछ दिखता है अपने को तो। फर्स्ट सेकंड तो हीट होगा, उसका कोई इशू नहीं है। यही वाला हीट हो रहा है इसमें। PQ400
Q401। शॉर्टिंग तो क्लियर हो गया, और देखूँ तो ठीक है। इन दोनों में से कौन सा गया है? इसका वैल्यू ठीक है, इसका भी वैल्यू एक तरह से बोलो तो ठीक आ रहा है, रिवर्स में गलत है। इसका एक बार स्कीमेटिक देख लेते हैं। स्कीमेटिक मिलता जुलता नहीं है इसका। 15 ये देखते हैं 14 वाला। पार्ट नंबर का ही बनना मिलता जुलता एग्जैक्टली नहीं है किसी किसी मॉडल में। ये है, ये भी है, ये तीनों इसमें तो नहीं है, कुछ डिफरेंट पार्ट नंबर में देखना पड़ेगा। तो कोई से भी मैच नहीं कर रहा है इसमें, और कहीं पे कोई और पार्ट नंबर। से पॉसिबल है इसका स्कीमेटिक नहीं होगा फिर। ठीक है, इसका
नहीं है। अब कैसे किया जाए तो समझने की कोशिश करते हैं, कौन सा सप्लाई वाला हो सकता है ये। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हो गया ट्रेन सपोर्टिंग। चलेगा अंदर नहीं है? PQ410 जो दिख रहा है ये इसका मेन मॉसफेट है, ठीक है। तो सेकंड यहाँ से क्रॉस होके आ जाएगा इसका सपोर्टिंग मॉसफेट के। इसमें यहाँ पे दिख रहा है ये ग्राउंड, ये वाली सप्लाई भी तो पूरी इम्पीडेंस 0 पड़ा हुआ। पॉसिबल है PCH का सप्लाई होगा, PCH वहाँ हो गया फिर और कोई, ठीक है। अगर PCH का सप्लाई होगा तो बोर्ड तो ट्रिगर होगा कम से कम। ट्रिगर तो हो गया। LED हो गया, इसका पावर स्विच, टच पैड, LED, बैकलाइट, मॉसफेट बिठा के देखते हैं क्या कहानी है। इसका कंट्रोलर दिया होगा बगल में, दिखा इसका डोनर बोर्ड। फ्लैश कौन सा है? ये है ना।
बोले देखो पूरा मेरे काम की स्थिति कैसी कैसी कर बैंक के काम को काम तो मैं नंबर से मैं काम ही घुस गई माइनस में 10,500 है कैसे होना चाहिए पैसा ले ले लोन ले लेकिन सोने से क्लियर हो गया। देखते हैं आगे का स्टोरी। इसका पावर बटन अपने पास नहीं तो लैपटॉप रखा है, देखो 7 मॉडल का खुला उनके कहीं पे रखा हुआ है। हाँ वो रहा, वो ग्रीन वाला ट्रे दिखा है? हाँ ऑन तो नहीं हो रहा है। पावर बटन देखना पड़ेगा इसका। नहीं उसमें ट्रे नीचे खाली वाली ऐसा कुछ पावर बटन वाला हिस्सा ही ऊपर से पैर से पिटा है डायरेक्ट ऑन भी नहीं हो रहा है। वोल्ट अभी भी ओके नहीं है बोर्ड में, वैल्यू अच्छा दिखा रहे लेकिन चलो भाई क्या कहानी है। CLR में कोई वोल्ट नहीं है। और ये 20 वोल्ट सब जगह जा रहे हैं। यहाँ भी आ रहा है सप्लाई 20 वोल्ट, 3.3 वोल्ट बन रहा है, 5 वोल्ट बन रहा है। ये सब तो ऑन होने के बाद बनेगा। ऑन होने के लिए इसका चाहिए हमको ट्रिगर करने के लिए इसका स्विच।
देख के तो लग रहा है शायद इसका पीसीएच चला गया होगा। ये वाला सप्लाई मेरे को पीसीएच का ही लग रहा है। इसके ऊपर कैपेसिटर क्या हालचाल है? ठीक है, शॉर्ट तो नहीं है। इसका वैल्यू बहुत लो पड़ा हुआ है ना। सीपीयू का सप्लाई होता तो हटाने के बाद नॉर्मल हो जाना चाहिए था। सेम बोर्ड है ना? बोर्ड भी नहीं है उसमें। ये सेम बोर्ड अपने ओके में रखा हुआ है। हाँ, वन 1.63 ohms। उसमें लगेगा स्विच वगैरह शायद।